Okay. हेलो एंड खुश आमदीद टेक तर्जुमा। मेरा नाम सिकंदर है और मैं आपका होस्ट हूँ इन दिस बाइलिंगुअल पॉडकास्ट दैट इज बेस्ड ऑल अराउंड टेक। ओके, आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे एवरीथिंग एआई। सो आई गेस द टाइटल मेक्स इट प्रीटी ऑब्वियस कि क्या हो रहा है। आज के एपिसोड में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे। टुडे फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन सम टर्मिनोलॉजी, जैसे एनएलपी क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, and then I'll follow this up with examples from multiple fields where AI is popping up. But first, let me explain what AI is. So, first thing first, ये AI है क्या? So, AI, एक सेकंड मैं ज़रा चैट जीपीटी से पूछ लूँ AI है क्या, so I can explain it. Okay, AI और artificial intelligence basically एक advanced computer program है. Think आपका Python code या आपका Visual Basic, जो मर्जी कोड आप लिखे, it's basically roots पे it's basically an advanced computer program जो आपकी बातें, images, text, सारी बातें जो आप उससे like basically any input you give it समझ सकता है और इस अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको एक ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स देता है। बेशक वो एक टेक्स्ट रिस्पॉन्स हो, एक इमेज बनाए या इवन कोई म्यूजिक बनाना हो, आई डोंट नो, कोई म्यूजिक भी कंपोज कर सकते हैं कुछ एआईज। द मेन पॉइंट इज it is very human like. It is basically artificial intelligence. Intelligence क्या है? इंसान के साथ। So the main point is the human like part. तो इसकी अहमियत क्या है? Why should I know what it does? Why should I know why it's important? AI is significant in today's tech landscape because it can be used for all of these various tasks, जो both professionally in the workplace or even personally for recreational use or personal uses, like I don't know, like I'm making this podcast. So it has the potential to revolutionize all of these industries immensely and improve in efficiency in many ways. तो वही जो मैंने अभी सारी examples दी थी, images, music even, or text. So now some terminology before we start talking about the fields where AI is popping up. Some terminology that is very important. I don't know, you might have heard about machine learning. Machine learning is a very like integral part. जब आप AI explain करते हो तो machine learning comes up a lot. Machine learning is basically how the AI starts to learn and gets better over time. ठीक है, machine learning artificial intelligence में involve करता है developing basically algorithms and data structures and models that enable the computer to analyze the data जो उसको मिल रही है। ठीक है, उसके अंदर से वो पैटर्न्स ढूंढता है, सीक्वेंसेस ढूंढता है कि उसने ये पहले बात कहाँ सुनी हुई है, कैसे सुनी हुई है, और फिर उसके बाद वो बेसिकली इन बातों को इकट्ठी करके सीखता है कि हाउ इट कैन आंसर दैट क्वेश्चन एंड हाउ इट कैन आंसर इट इवन बेटर देन इट डिड लास्ट टाइम, जब किसी और ने ये क्वेश्चन उससे इसी टाइप का पूछा था। तो विदाउट इट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड इन बाय सम अदर प्रोग्रामर, लाइक किसी प्रोग्रामर को ये बात उसमें लिखनी नहीं पड़ती कि अच्छा ये बात इसने बेहतर इस तरह करनी है, वो खुद सीखता है ऐसे अपने खुद ही एग्जाम्पल से और एक्सपीरियंस से, इन अ सेंस, व्हिच इज अ लिटिल स्कैरी नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज एनएलपी और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, या नेशनल कहने लगा था हाँ, पाकिस्तानी नेशनल। ओके, सो बेसिकली एनएलपी इज द प्रोसेस जिससे आपका एआई आपकी बात ऑन द फर्स्ट स्टेप समझता है। आप जो से इनपुट देखते हो वो फर्स्ट आपका प्रॉम्प्ट देखता है, बेशक वो आप उसे एक इमेज दो या टेक्स्ट दो या कुछ भी दो और वगैरह। इट ब्रेक्स इट डाउन वर्ड बाय वर्ड, लेटर बाय लेटर एंड इवन पिक्सल बाय पिक्सल। ठीक है, वो उसमें से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है कि अच्छा इस जगह पे रेड कलर है, इस जगह ब्लू कलर, इमेजेस की बात कर रहा हूँ, या ये वर्ड इस वर्ड से पहले आया या आगे पीछे लिखा हुआ है, जैसे मर्जी लिखा हुआ है, वो उसमें से ऐसी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है और फिर वो उसे यूज़ करके अपने कोड से कंपेयर करता है जो मशीन लर्निंग के थ्रू उसका डेवलप होता है कॉन्स्टेंटली। वो उससे कंपेयर करता है, इफ इट्स समथिंग टू लर्न इट लर्न्स इट, इफ इट्स समथिंग दैट इट ऑलरेडी नोज हाउ टू आंसर प्रीटी वेल देन इट प्रोसीड्स टू आंसर दैट। वो फिर इसी इंफॉर्मेशन सारी को यूज करके आपको रिस्पॉन्ड करता है। द एनएलपी पार्ट ऑफ दिस इज एवरीथिंग दैट हैपेंस between getting a prompt and answering it. NLP is what happens when the processing that happens in between. So NLP is a very important part in many chatbots that use AI, जिनसे आपको एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स मिलता है आप जब उस प्रॉम्प्ट देते हो। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनएलटी, जैसे सीरियल एक्स और चैट जीपीटी, इवन दे यूज एनएलपी वेरी फ्रीक्वेंटली एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ऑब्वियसली आपके दिमाग में आ रहा होगा बात कि और कैसा एआई होता है, या एआई इज यूज फॉर अदर पर्पसेस टू, फॉर दोस हु डोंट नो। लाइक कोई डेटा एनालाइज करनी होती है और उसने कोई पीछे से स्ट्रक्चर बना होता है, लाइक आई डोंट नो, ट्रैफिक एनालाइज करता है कैमराज के अंदर। आपके ट्रैफिक कैमराज के अंदर शायद एआई कोई इस्तेमाल हो रहा हो, पाकिस्तान में तो नहीं खैर, मगर समवेयर एल्स इन द वर्ल्ड विच एनालाइजेस ऑल ऑफ द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू, हाउ मेनी कार्स, व्हाट टाइप ऑफ कार्स, ऐसी चीजें भी वो एनालाइज करता है। दैट इज आल्सो अ वेरी गुड यूज केस फॉर एआई। So it's not just talking to a machine or something. Okay, so let's move on to how AI is blooming in a lot of industries around the world. So first up, we're gonna go step by step by the industry. Okay, first we have let me scroll. Oh, my laptop is dying. So first we have AI in healthcare. A weird thought because AI इधर healthcare की तरफ आप usually पहली चीज जाते नहीं हो, मगर that's the point. इसलिए I'm talking about this first. इस फील्ड में AI is relatively new, but as it literally involves life and death situations, so you don't really want to trust a machine right now. Magar, it has the potential to improve nearly every aspect of it, both life and death. Okay, that's a little grim. Acha. Firstly, AI algorithms can assist in early diagnosis and disease detection. It look by like basically the AI would look at your history. It would look at every single illness you've ever had. It would look at what दवाइयाँ you're taking पहले से ही ठीक है, और फिर इस हिसाब से वो आपको एक अर्ली डायग्नोसिस दे सकता है और डिजीज डिटेक्ट कर सकता है जल्दी, rather than some guy who's been hoarded by 200 patients a day. तो इट्स बेटर इन दैट वे कि वो एक डायग्नोसिस और डिजीज डिटेक्शन में आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। और इन ऑन दैट पॉइंट, बिकॉज इट नोज ऑल ऑफ द दवाइयाँ you're taking, all of the बीमारियाँ you've had in the past, it can also give a very personalized treatment plan. Like आपके हिसाब से वो आपको एक treatment plan दे सकता है। Like वो आपसे पूछ कर रखेगा कि आपकी क्या नाम है, एलर्जीज क्या हैं, किस स्पेसिफिक आप दवाई से एलर्जिक तो नहीं हो, किसी ड्रग से आपको मसला तो नहीं होता कोई, which is a lot to track for a normal human being. So an AI can help with that. Okay. Next up, on this same plane, AI driven chatbots जो होते हैं, which we've already talked about, ऐसे chatbots can also help in medical treatments. तो virtual assistants जो होते हैं, they can enhance patient engagement with the doctors and the medical systems, ठीक है। तो वो आपके सवालों का जवाब दे सकते हैं, आपको हेल्थ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जो नॉर्मली आपको गूगल करके डिफरेंट वेबसाइट से ढूंढनी पड़ेगी, आपको डायरेक्ट एक जगह से ही आपको सारी अपनी हेल्थ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, विच कैन देन बी डबल चेक्ड और लाइक प्री चेक्ड बाय सम एक्चुअल डॉक्टर और मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। And all of this can be done without having to book very expensive appointments, जो कि आपको यूजुअली शायद करनी पड़े, आई डोंट नो, बेशक ऑनलाइन भी अब तो होते हैं ऐसे अपॉइंटमेंट्स, मगर लाइक किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है आपको ऐसी चीज़ों के लिए, नॉर्मल थिंग्स। कुछ एक्चुअल एग्जांपल्स फॉर दिस, फर्स्ट वी हैव पाथ एआई which uses machine learning to diagnose diseases from the pathology slides. Basically वो slides होती हैं, इसके ऊपर आपके samples होते हैं, तो वो उनको एनालाइज करके अपने क्या नाम है डेटाबेस और मशीन लर्निंग यूज करके अपने देखता है कि वो इसने ऐसे स्लाइड्स किन डिजीज के साथ मैच किए हुए हैं, तो दे कैन लुक एट दीज योर सैम्पल स्लाइड्स एंड बहुत अर्ली डिटेक्शन अगेन ऑफ डिजीजेस हो सकती है, ठीक है। सो पाथ एआई यूजेस दैट। उसके अलावा टेम्पस है जो आपकी क्लिनिकल डेटा यूज करता है, इंडिविजुअल की क्लिनिकल डेटा यूज करता है और उनको ऑन्कोलॉजिस्ट को एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान पहले से दे देता है, ताकि वो ऑन्कोलॉजिस्ट को फिक्र ना करनी पड़े, अच्छा इस बंदे को इस चीज़ से एलर्जी है, इस चीज़ से एलर्जी है, ये दवाई नहीं देनी है, दवाई देनी है, तो वो सारा काम हैवी वर्क एआई कर सकता है। और ऑब्वियसली सुपरवाइज करना ही पड़ेगा इसको, until it's like perfect, तो it still has the क्या नाम है revolutionary potential. उसके अलावा even surgery where you wouldn't think कि आप you would even let a machine like that get close to, मगर even in surgery इसके uses अभी से ही नजर आ रहे हैं। जैसे एक miniature robot है which I saw a reel on Instagram about, this is pretty cool. Its name is let me check, Heartlander. Okay, Heartlander, and what it does is that it helps in heart surgery by basically it's a very small miniature robot that the doctor, when performing heart surgery, basically puts in or like inserts into your heart through an incision, and inside the heart it has the ability to move around using AI, and because it's not remote controlled, so it learns it from its surrounding and it moves around,
और ये यूज करके वो बेसिकली अंदर का एक पूरा नक्शा बना लेता है, ठीक है। वो स्कैन करता है और एक पूरा इंटरनल मैप बनाता है ऑफ द हार्ट विदाउट हैविंग टू यूज लाइक रेडिएशन और समथिंग टू विच कुड हार्म द पेशेंट। तो वो ऐसे एक पूरा मैप बनाता है विच हेल्प्स अ लॉट इन हार्ट सर्जरी इन डिटेक्टिंग कि किधर मसला है किधर नहीं है, और किस जगह पे एक्चुअल इंसर्जन वगैरह करनी है, जैसे स्टेंट वगैरह डालने के लिए भी ऐसी चीज़ों में होता है। तो yeah, stuff like that is pretty cool. So AI in healthcare is a pretty cool thing. So let's move on. Let's talk about AI in business. Businesses may, I'm talking about like financial decisions in marketing and business decisions with mostly large conglomerate businesses or even small businesses can use AI. So first off, the ये क्या लिखा है मैंने? हाँ, first we find stuff like finances where businesses, yeah, क्या बोल रहा हूँ मैं? Okay, so first off, we're talking about finance. Finance के अंदर even businesses or personal individuals, they can use AI for information about trading or managing their funds or developing their portfolios. AI can really help them and look at their personal. If we're talking about an individual, they can look at the person's existing portfolio and existing funds and manage them, or like give suggestions on how to improve their whole credit and account. So there are bots for that. उसके अलावा AI can predict market risks, which was previously a job of brokers and stuff who usually rip people off, but an AI can't really rip people off like that. तो वो आपकी existing market trends देखता है और उसको predict कर सकता है कि वो बढ़ेगा या कम होगा, कब invest करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, when to buy out, which obviously अभी भी gamble है because market है, like it's still a prediction, it's not like a fact. So but still I would more rather trust a computer who learns a lot through this than a person who just than a person's अंदाजा कि market किधर जाएगी, because you know he could be lying or she could be lying, or like they could be trying to rip you off, or even I don't know, they just could be wrong sometimes. इंसान ही है, machine भी गलत हो सकती है, I know, but still it has a better chance. उसके अलावा हाँ, उसके अलावा फाइनेंशियल कंपनीज एंड मोस्ट लाइक न्यूली इंश्योरेंस कंपनीज वो एआई को यूज करके फ्रॉड डिटेक्शन कर सकते हैं, बिकॉज बेसिकली फ्रॉड होता क्या है, बेसिकली इट्स अ सीरीज ऑफ पैटर्न्स के आप सही जा रहे हो फिर एकदम आप बुलशिट करते हो, तो यू नो इट्स अ प्रॉब्लम, दैट्स व्हाट फ्रॉड इज बेसिकली. So it is essentially a series of patterns that you have to follow. And what's good at pattern detection and recognition? An AI. For example, JP Morgan Chase, a very big finance company, a very big finance company in the US, regularly uses AI to analyze legal documents, reducing the time spent on this task, basically this very important and bulky task, by thousands of hours. And they actually even caught cases of frauds through this. बस वो लीगल डॉक्यूमेंट्स एनालाइज करने होते हैं और देखना होता है कि लाइक इस बंदे ने फ्रॉड तो नहीं किया, बेसिकली इट बॉइल्स डाउन टू दैट. तो they've actually got cases of fraud, which is pretty cool, I have to say. और एक और काफ़ी पॉपुलर यूज ऑफ AI is in marketing. This is in the same side, business के साथ ही आता है. तो companies can use AI to analyze an individual's data, और फिर वो आपके लिए टारगेटेड एड्स क्रिएट करता है AI, और मार्केटिंग कैंपेन्स बनाते हैं लोगों के लिए फॉर लाइक अ स्पेसिफिक डेमोग्राफिक ऑफ पीपल. वो देखते हैं कि वो क्या चीज़ खरीदना चाह रहे हैं, लाइक आई डोंट नो if like some for specific people who go to the gym a lot, I don't know, they might start selling protein or some other supplements to them. Yeah, if some people are work from home people, like वो CA से काम करते हैं or something, so companies might target ads about laptops and cameras or mice and keyboard वगैरह to them. So AI can effectively track what you search for and track what you search on Amazon or something, and create ads and marketing campaigns for them. And it's not just about selling hardware. They can even be something like Netflix or Spotify can use something like this to recommend content. जैसे अभी जो Spotify का recently DJ आया, जो honestly is very very good. You have to check it out. It might not have rolled out for you, or it might not even be like showing up for you on your front page. Just search DJ on Spotify and you might get a specific icon. It has a whole voice and everything, and it talks to you, and it
recommend specific types of music that you listen to or were listening to for a specific for like 4 to 5 songs, and you can skip it. It's actually pretty cool. You should check it out अगर नहीं देखा. Uh, so and it also gets it right suspiciously often. Like बहुत अजीब बात है कि आप स्पेसिफिकली जो सुनना चाह रहे हो वो मोर ऑफन देन नॉट वही लगा देता है, फॉर मी एटलीस्ट. तो AI इज क्रीपी बट कूल इन दैट केस. एक और नई चीज जो अब वेबसाइट पे बहुत नजर आ रही है, आप खोलोगे वेबसाइट कोई शॉप, आई डोंट नो, इवन अ लोकल शॉप और समथिंग फॉर लाइक that sells a very specific niche item, उसको भी खोलो तो एक नीचे राइट में ना छोटा सा, और आई गेस दिस इज द राइट, छोटा सा एक बटन आ रहा होता है फॉर लाइक अ चैट बॉट और अ स्मॉल लिटिल चैट बटन इन द कॉर्नर. ये पहले तो खैर इधर मोस्ट प्रोबेबली कोई डायरेक्ट एक्चुअल पर्सन आपको थोड़ी देर में रिप्लाई करता था, मगर नाउ देर ऑल, इफ नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ देम आर AI जनरेटेड. तो AI बेस्ड चैटबॉट्स होते हैं. So these are actually pretty cool because they integrate the website's deals and offers into a 24/7 customer support chatbot type thing. तो आपको जब भी आपको कोई चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है या पता लगाना होता है कि इसकी डील आ रही है या नहीं, you can just ask that bot and it will probably reply instantly and it will probably get it right because वो उसकी database से related होता है. And now since they're AI based, so they even might like be able to actually have a conversation that feels like you're talking to a actual rep, which is actually which is pretty good. मैंने actual कितने बार बोला है, which is pretty good for companies to sell more products and seem more human. और उससे customer satisfaction obviously ज़्यादा होती है. Even like supply chain for very big companies, for small companies, for very big companies and their supply chains, even उसमें भी AI का नजर आता है. businesses like AI का like use नजर आता है for businesses like DHL और Amazon delivery. उन्होंने जो डिलीवर करना होता है, they use AI powered tools to optimize the delivery routes ताकि ड्राइवर्स को अंदाजे से ना करना पड़े as they used to, और even like मैप्स वगैरह ना करना पड़े. I'll get to that in a second. मगर वो AI से यूज करते हैं अपने डिलीवरी रूट्स ट्रैक करना, और दिस रिजल्ट्स इन अ सिग्निफिकेंट टाइम रिडक्शन. और हाँ, एंड इवन पर्सनल साइट्स पे एज यू टॉकिंग अबाउट गूगल मैप्स भी अब AI इंटीग्रेट कर रहा है काफी ज्यादा टू मेक एजुकेटेड गेसेस तो नहीं है, एजुकेटेड प्रेडिक्शंस on how busy places will be if there isn't enough data. Like आप किसी जगह जाते हो and somehow not a lot of people are using Google Maps right now, तो उस जगह की डेटा वैसे इतनी नहीं आ रही, तो an AI will make an educated guess of sorts, चलो, या एक प्रिडिक्शन करेगा कि अच्छा इस वक्त यूजुअली इतना बिजी होता है ये, डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ डे, व्हाट डे इट इज देयर एन इवेंट गोइंग ऑन और समथिंग. तो उस हिसाब से आपको डेटा दे सकता है, which is pretty much reliable. So it's fine, it's good actually. Okay, next up we have creative uses, which is where AI first started booming and which is what you hear about the most. So either content writing, image generation, music generation, और पता नहीं क्या क्या आप बना सकते हो, आप पूरे कमरे बना सकते हो in 3D. So this is where AI has really spread like a fire. ठीक है, तो कंटेंट राइटिंग बॉट्स तो खैर लाइक ग्रामरली और ओके लाइक ग्रामरली और चैट जीपीटी वगैरह आती है, तो इन्हें बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर दिया है. अब एक बेसिकली एक गूगल सर्च ही करनी होती है और आपको लिटरली लाखों बॉट्स का एक पूरा पेज आ सकता है. तो चैट जीपीटी इज द रियल कोड अबाउट फॉर कंटेंट राइटिंग, दो विद प्रॉब्ली सम ऑफ द बेस्ट राइटिंग स्टाइल्स, बट उनके लिए भी ना आपको एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट चाहिए होता है. लाइक उसमें आपको उसके स्टाइल्स बताने होते हैं उस प्रॉम्प्ट के अंदर, इफ यू रियली वांट टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ चैट जीपीटी. इवन जीपीटी 3.5 इज परफेक्टली फाइन एंड इट्स परफेक्टली viable for you to use to get a very good content writing use out of it. तो मगर उसके लिए वही अगेन prompts. उसके अलावा we have Midjourney and DALL-E 2 which was recently released, जो आपको एक क्लिक में freakishly real images generate करके दे सकते हैं, और even freakishly unreal images if you want that. They can be out of this world, something you've never seen before, which is really hard to comprehend for a normal human, and AI can generate that, whether that be on purpose or not on purpose, because I've seen that before.
But what I think is the most notable and honestly the one most people would actually use in their work or professional lives other than ChatGPT, because वो तो सारी इस्तेमाल करें ना, वो है Adobe का Photoshop का generative fill. भाई ये सही जा रहे हैं वैसे कसम से. सीधा ही क्या नाम है, let's scroll out. हाँ, मैं कह रहा था ये is actually a really good idea and anyone who came up with that should like, अब प्रमोशन क्या प्रमोशंस करनी चाहिए उन्हें. सीधा ही आपके एडिटर में एक वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड इजी टू यूज एंड रियली गुड माइट आई ऐड जनरेटर, इमेज जनरेटर. और क्या चाहिए आपको. पहले आपको मिड जर्नी या डाली या जो मर्जी आप एआई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे थे वो यूज करके एक इमेज जनरेट करनी है. वो शायद अच्छी ना हो, आई डोंट नो, 3-4 दफा उसे जनरेट करना है, अपने क्रेडिट्स ज़ाया करने हैं. जनरेट हुई है इमेज, फिर उसके बाद आपको क्या नाम है डाउनलोड करनी है, एडिट करनी है. It's way too complicated and you have to color match it. Maybe it's not right for what you're trying to do. I don't know. But in Photoshop's generative AI, just select an area, select what you want to do with it. I don't know, whatever you want to do. और वो आपको इतने सारे options भी दे देता है ऊपर से, तो click through it, whatever you want, whatever works right for you. So it's a huge plus for content creators, and especially since it's copyright free, तो आपको कोई मसला भी नहीं होगा using it in your videos or your content वगैरह. So it's a really huge plus for content creators, especially, and even for personal use. It just makes your life so much more convenient and easy. Okay, so next up we have AI and autonomous systems. Okay, so autonomous systems से मेरा मुराद है कि जैसे गाड़ियों में और ट्रांसपोर्टेशन ऑटोनमस सिस्टम्स होते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स वगैरह, या इसके अलावा ऑटोनमस सिस्टम्स के अंदर आपकी स्मार्ट होम थिंग्स भी आ सकती हैं जो आपके घर के अंदर सिस्टम्स होते हैं, लाइक गूगल होम और एलेक्सा और समथिंग. ओके, सो इन ऑटोमेशन इन सेल्फ ड्राइविंग कार्स एक का क्या नाम है एआई प्लेज अ वेरी क्रूशल रोल. ठीक है, इन ऑटोनमस नेविगेशन. जैसे फॉर एग्जांपल टेस्ला, जब आप उसका यू नो द थिंग ऑन द की, नॉट ऑन द की, सॉरी, ऑन द ऐप, जो उसका समन फीचर है, इज काइंड ऑफ अंडररेटेड आई हैव टू से. यू डोंट सी अ लॉट ऑफ कंटेंट अबाउट दैट. जब आप उसका समन फीचर यूज करते हो, it automatically comes towards the person who summons it or the person who's holding the phone, and the whole process is basically from start to finish is done with AI, because the car has to start up, it has to monitor its surrounding. अगर parked है तो it needs to get out that parking space and without hitting any other cars or digging the bumpers or anything. It needs to plan the whole route from the parking spot to you. उसमें कोई कर्व्स वगैरह, बेंड्स, कर्व्स, सब कुछ हो सकता है, so they have to go around that, and it has to stop where you are without running you over. All of that is done with AI. The object detection, the path planning, navigation and everything, it's all done with AI. So AI uses all of the sensors and cameras, the LiDAR and radar sensors on the car, and employs all of that data it learns from its surrounding, machine learning, and basically that is what automation is essentially. Using all the data around you and doing things without human intervention. Okay, that is automation in self-driving cars. This is also seen in autopilot, or what's the Mercedes auto drive, or yeah, I don't really care about all the other ones except for the autopilot that Tesla has, because that's the only one that started it. So moving on. AI can also be used in the transportation industry as a whole, not just in self-driving cars. What I mean by that is कि आप उससे ट्रैफिक रिड्यूस कर सकते हो और इवन एक्सीडेंट्स भी कम कर सकते हो. कैसे? वेल, AI से आप जो आपकी अर्बन प्लानिंग है सारी और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर कर सकते हो इन अ सेंस, है ना. because you can look at your सड़कें देख सकते हो, अपनी मोटरवेज देख सकते हो, अपनी हाईवेज देख सकते हो, and see कि how this can be improved to improve congestion, improve the spots जिधर congestion ज़्यादा होती है. AI can detect किधर congestion ज़्यादा होती है very accurately by using data and trends, और फिर उसके बाद आप उस एरिया को या तो like I don't know, make the roads wider, make an underpass or overpass or something, and that all can, the planning phase of this can be done with AI to make the traffic flow more efficient. Also, in the transportation industry, there is the public transport and ride sharing and stuff. So AI in ride sharing services is a very big thing. जैसे the company Waymo, the thing that started this, formerly Google की self-driving car project,
in the US, उनके पास completely driverless taxis हैं. Like literally आप गाड़ी का दरवाजा खोलते हो, 2 सीटें इस तरफ पीछे की तरफ फेस कर रही होती हैं, 2 सीटें आगे की तरफ फेस कर रही होती हैं, and they're all like facing towards like common room of sorts. No driver, no nothing. It just goes off, and you sit in it, and you go off. So these use AI to travel around specific parts of, say, LA or Santa Monica, and basically, आप बुलाओ, no one in the front seat, you're on your way, which is pretty cool, I have to say. पता नहीं यहाँ कभी आएगा या नहीं. अच्छा, next up we have the autonomous home thing I mentioned. The AI in autonomous systems in homes. इधर भी काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेट होता है to create these smart homes. जैसे वॉइस एक्टिवेटेड असिस्टेंट्स लाइक अमेजोन का अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट वो AI यूज़ करते हैं इन होम सिक्योरिटी, एनर्जी मैनेजमेंट, आपकी अप्लायंसेस चलाते हैं, और बेसिकली दिस क्रिएट्स अ फुली ऑटोमेटेड स्मार्ट होम जिधर आपकी सारी लाइट्स, सारे पंखे, सारे दरवाजे, सारे अप्लायंसेस, ऑल योर लॉक्स इवन are controlled via wireless connectivity or essentially managed by an AI, an artificial intelligence. So it relieves most of the human intervention और आपकी ज़िंदगी इससे आसान ही होती है, I guess. Be that it might get a little scary. Okay, so we're 27 minutes in, I think, and my camera is gonna stop recording. Wait, I'm gonna restart the recording. Yeah, we're back. My camera died. Okay, so next up, we have two more things to discuss. First off, we have the pivotal role of AI in research and development. So basically, as we talked about before, AI has the ability to analyze a vast number of data sets. They have the ability to discover patterns in those data sets and make predictions that has revolutionized the pace and scope of information processing and innovation. So basically, it accelerates scientific discovery by in fields such as biology, chemistry, physics, and it can analyze and model complex scientific data, make graphs, and gives quicker insights and discovery of very novel solutions. Like in maths or something, it can analyze patterns in your data and find cool things like that and give you a lot of in-depth information about what you're looking at. And moving on, in energy and sustainability, AI can contribute to sustainable R&D by optimizing energy consumption and resource management. This enhances the efficiency of renewable energy systems and helps address environmental challenges. Okay, ये तो मैं भी पहले दफा पढ़ रहा हूँ. Okay. Anyway, moving on. In material science, आप AI use कर सकते हो to make very cool materials like Kevlar was found by weaving specific polymers in specific ways. In the same way, an AI can use its complex dataset to find out कि किस तरह से आप क्या चीज़ tailor करोगे तो वो ज़्यादा strong होगी. Like a fabric of some sort, if you tailor the same material in a different way, it might have different properties. It might have different abilities, like वो stretch कर सकेगा या वो resistant होगा किसी specific, like even bulletproof things can be formed if woven in a specific way. So AI can do that. उसके अलावा in engineering and design, again it can model these things, but that's about it in R&D. Also, if you're writing a specific AI paper, this is a pretty cool thing that I learned recently. You can use specific AI bots and chatbots. उनको आप अपना पेपर प्रोवाइड करते हो एंड इट रीड्स थ्रू इट और वो देखता है कि अच्छा क्या चीज़ पहले से डिस्कवर हुई भी है, तो वो बट दीज आर पेड दो, वो उनको कंपेयर करता है फ्रॉम 2 अदर पेपर्स, और फिर उससे आप यूज़ कर सकते हो अपनी सारी डेटा को, एंड यू कैन फाइंड आउट कि व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कवर्ड बिफोर एंड यू कैन साइट दैट इन योर पेपर. तो ऑटोमेटिक साइटेशन एंड लिटरेचर रिव्यू हो जाता है आपके पेपर का, which is pretty cool. Okay, so next and the last thing we have to discuss today is ethical concerns with AI, because end pay, it's not human. The first thing that comes is bias and fairness. आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हो कि ये जो एक AI का एल्गोरिदम प्रिडिक्ट कर रहा है या परपेचुएट कर रहा है वो बायसेस उसमें प्रेजेंट हैं या नहीं. जो आप उसको ट्रेन कर रहे हो AI बॉट को, उसके अंदर शायद बायस हो कोई, तो वो आगे आपकी रिस्पॉन्सेज में भी बायस आ सकता है. Because again, machine learning, it learns from what you give it and then it answers like that. तो इसके अंदर कोई क्या नाम है रेशल बायस आ सकता है, कोई इकोनॉमिक बायस आ सकता है, इस चीज़ों का बायस आ सकता है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फेयरनेस एंड इक्विटी to be a very important standpoint when creating an AI and when AI is making a decision.
नेक्स्ट अप वी हैव प्राइवेसी कंसर्न्स ऑब्वियसली कि आप एक एआई से बात कर रहे हो, आप उसको अपनी सारी डेटा प्रोवाइड कर रहे हो, यू आर ऑप्टिंग इनटू aid in its machine learning because you have to opt in, otherwise you can't use it. It's in the main thing, it's in the main terms of use. तो ऑब्वियसली प्राइवेसी राइट्स का मसला आता है और पोटेंशियल होता है कि जो एआई को डेटा जा रही है इट कैन इन्फ्रिंज ऑन अ पर्सनस राइट्स, इट कैन इन्फ्रिंज ऑन द प्राइवेसी राइट्स बाय एक्सटॉर्टिंग डेटा और समथिंग, आई डोंट नो, कोई इविल बंदा कर सकता है पीछे से। उसके अलावा वी हैव द इन्फेमस ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम इन एआई वेयर जो अंदर की उसकी वर्किंग है सारी कि वो कैसे अपनी डेटा इस्तेमाल कर रहा है वो हमें नज़र नहीं आती, और वो बेसिकली नज़र आ भी जाए तो वो ईजिली अंडरस्टैंडेबल नहीं होती। तो एक ट्रांसपेरेंसी इशू होता है कि वो अपनी डेटा इस्तेमाल कर कैसे रहा है। तो बेसिकली एक नीड है फॉर ट्रांसपेरेंट एआई सिस्टम्स स्पेशली इन हेल्थ केयर एंड फाइनेंस बिकॉज दोज आर रियली इंपॉर्टेंट एंड दोज इफेक्ट अ पर्सन डायरेक्टली, वो कैसे इस्तेमाल कर रहा है आपकी हेल्थ डेटा और वो आपकी फाइनेंशियल डेटा कैसे इस्तेमाल कर रहा है, या अगेन द सेम एज अ प्राइवेसी थिंग। नेक्स्ट वी हैव अकाउंटेबिलिटी इशूज। हाँ ऑब्वियसली अगर एक एआई इस्तेमाल करो एंड समवन गेट्स हार्म्ड इन दैट वे, अगेन हेल्थ केयर और autonomous cars or something, कोई ऐसा मसला है, so who is responsible? The makers of the AI, I mean they just created the software, you're the one who used it. तो ये चैलेंज है ऑफ असाइनिंग अकाउंटेबिलिटी जब एक एआई ऑटोनमसली अपना काम करता है। इधर लीगल उसमें भी काम आ सकता है, लीगल उसमें भी मसला आ सकता है कि आप एक एआई को अगर यूज़ कर रहे हो फॉर अ लीगल डिसीजन तो, और अगर गलत है ये तो फिर आप किसी को अकाउंटेबल नहीं कर सकते एंड विच इज़ जस्ट रॉन्ग फॉर एवरीवन इन्वॉल्व। उसके अलावा ऑब्वियसली जॉब डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेरी बिग थिंग, यू कैन यूज़ एआई टू basically do anything at this point, so you don't need a lot of things. A lot of people have been laid off especially in the computer science industry because आप AI यूज़ कर सकते हो to write your code, you don't need programmers anymore. तो इम्पैक्ट एक बहुत बड़ा आता है जॉब मार्केट पर, एम्प्लॉयमेंट पे। तो इसलिए there needs to be strategies for reskilling and upskilling the workforce ताकि वो AI related changes से अडेप्ट कर सकें और उनको ज़्यादा मसला ना हो AI के आने से उनकी जॉब एरिया में। अच्छा, last two things we have are again AI in criminal justice and autonomous weapons. Autonomous systems तो बनते हैं मगर what if you use that for a weapon? What if you use AI to detect a person of a specific race or something, or I don't know, create a weapon against them, or a person of a specific army or something to create a weapon against them? This could be really bad, especially in biological warfare or something, because of AI based bots. तो एक बहुत अजीब सी बात आ जाती है, जैसे आई डोंट नो, दिस रियली लीड्स इनटू साइंस फिक्शन नाउ, बट स्टफ लाइक वीव सीन इन द मूवीज और सम गेम्स जिधर एक स्पेसिफिक कोई बायोलॉजिकल वेपन है जो कि एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करता है, बी दैट द अपोजिंग साइड्स आर्मी और समथिंग, और सिविलियंस इवन, व्हिच इज इवन वर्स। तो AIs can be used for that, so it's scary. तो discussions on international treaties और regulations होनी चाहिए to prevent the use of AI in warfare. And few other things, AI in social media. Again, social media के अंदर AI is used to recommend specific videos to you or reels to you. तो वो एक algorithm जो develop होता है वो mostly AI based होता है। तो misinformation especially इससे spread हो सकती है बहुत ज़्यादा if you're around that circle. So this is a very weird ethical responsibility that companies have to look after because it's also important. The tech companies have to balance freedom of speech with the need to combat harmful content because there needs to be a balance. और उसके अलावा हाँ, the whole problem is that there needs to be ethical AI development. There needs to be an awareness कि आप एक AI से जो बात करते हो आपसे सीखता है. It's like a small child. You say something to it, it's gonna repeat it somewhere else. It might repeat something else like that. So there needs to be ethical AI development. First off, it should not even accept quotes or like prompts that have an unethical base to it. And secondly, it shouldn't repeat that. So it has both parties in play, the developers and the users. Because an AI is again like a child, it learns from you. So that is all we have to cover about artificial intelligence today. Let me know what you thought about in the comments, and let me know how I can improve this thing because this is like the first time I'm doing this. So how this is gonna work from now on is Facecam तो होगा, अगर मेरा कैमरा ना मरा अभी भी, पता नहीं चल रहा है या नहीं. If it dies, you're gonna see a black screen for the rest of this. I don't know, I'll play some memes or something. Magar, I'm going to upload as much as I can, but I have papers and stuff coming up, so it might not be weekly, once every 2 weeks maybe, and I need
more interaction about topics because I'm running out of like standalone topics like AI. So I might even resort to like doing just tech news that comes out, different hodgepodge of tech information every episode. So it might not just be about a very specific topic like this one when I run out of these topics, obviously. So yeah, thanks for tuning in, and this was Tech Tarjuma. Okay, goodbye. Allah Hafiz.